central government over the match, saying that India should not play with the enemy, and also saying that Pakistan should be treated like an enemy, and also questioning the need to play with Pakistan. And that's a reaction coming in from the Congress party, saying that leadership must respect people. India and Pakistan match has sparked a political storm back in the country. Have a look. देश की भावना का सम्मान होना चाहिए, इस पर तो दो राय नहीं है। लेकिन देश की भावना का सम्मान आंखें बंद करके, आंखें मूंद के और अपना मस्तिष्क का उपयोग ना करके नहीं किया जाता है। लीडरशिप का रोल ये होता है कि आप सही रास्ता दिखाएं भी। लीडरशिप का सवाल सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको आवाम रास्ता दिखाए, आवाम का सम्मान हमेशा हमेशा होना चाहिए। वो डेमोक्रेसी का जुज है डेमोक्रेसी का। अगर वो ना हो तो डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी में आपका ये भी रोल है, आपका ये भी दायित्व बनता है कि आप रास्ता समझाएं, बताएं, सही रास्ता क्या है वो दिखाएं। पाकिस्तान को एज ए एनिमी ऑफ कंट्री, हमारे देश का वो दुश्मन है, उसको दुश्मन जैसा ही ट्रीट करना चाहिए। उनके साथ कोई हमारा लेन देन नहीं है। उन लोगों को पता है जो पाकिस्तान के साथ रहते हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं, और पाकिस्तान कैसे प्रॉक्सी वार अगेंस्ट इंडिया लड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ वो लोग आके हमारे मुल्क के अंदर आतंक फैलाते हैं, उनके साथ एक तरफ जंग होती है, दूसरी तरफ आप क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, क्रिकेट का मैच या कोई भी खेल दोस्तों में खेला जाता है, दुश्मनों के साथ खेल नहीं खेले जाते। ये वही देश है, वही भारत है कि पहले पाकिस्तान खेलने से इनकार कर रहा था। अरे हमें खुद ही नहीं खेलना चाहिए था। और जो क्रिकेट मैच खेला पहलगाम के बाद, वो बहुत शर्म करने वाली बात थी। उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं जितने पहलगाम में हमारे 26 लोगों की हत्या कराई। और नौटंकी, यानी नौटंकी ही है इस सरकार की सारी क्रियाकलाप कि हाथ नहीं मिलाएंगे। अरे क्रिकेट तो खेल लिया, कह रहे हाथ नहीं मिलाएंगे। भारत पाकिस्तान का मोस्ट अवेटेड 2020 मैच है। ये मैच रोमांचक हो और भारत की जीत हो, इस बात की हम लोग कामना करते हैं। और साथ में हाथ मिलाने और ना मिलाने का जो सवाल है, वो फैसला यकीनन कप्तान का होगा। कप्तान देश की भावना क्या है क्या नहीं है, ये कप्तान अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, वो वैसा फैसला लेंगे। हम एक अच्छे मैच और भारत की जीत की उम्मीद करते हैं। देखिए, हम लोग तो पहले से हमारा स्टैंड है कि तय करना चाहिए भारत सरकार को कि हमको पाकिस्तान के साथ खेलना है या नहीं खेलना है। लेकिन असमंजस में है भारत सरकार। और क्रिकेट बोर्ड का जो हमारे चेयरमैन हैं, वो गृह मंत्री के बेटा है, उनके पुत्र हैं। और इसीलिए शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए व्याकुल है हमारी भारत सरकार। For more on this, let me go across to Pradeep Bhandari of the Bharatiya Janata Party. Thanks so much for connecting with us. How do you look at the statement that has been coming from the Congress party that a match between India and Pakistan should not take place because Pakistan is an enemy country? So in a way, the central government is betraying the people of the country. All right, we'll try and reconnect that line with Pradeep Bhandari of the Bharatiya Janata Party, but a controversy has erupted. Now, we're learning as far as the politics is concerned, a reaction has come in from the Congress party, and they're saying that Pakistan should be treated like the enemy nation and no match should be played with them, and also targeting the central government over the match, saying that India should not play this match. In fact, my colleague Dave has filed this exclusive report from Noida Stadium to decode the sentiment on the ground, what the fans are saying. Take a look.
पहले तो आप सभी का धन्यवाद बात करने के लिए। आज शाम को जो मैच है इंडिया पाकिस्तान की, उसको लेकर बहुत पहले ही कंट्रोवर्सी हुई है। आखिर में पाकिस्तान ने अपनी नाराजगी ना दिखाते हुए भारत के साथ खेलने का फैसला किया। आपको क्या लगता है? जैसे कि पता ही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ही होता है और 2007 का 2024 का भी हम मैच जीत चुके हैं। आज भी हरा ही देंगे ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि जितने भी स्टार प्लेयर्स है सारे फॉर्म में ही चल रहे हैं। हमारे सूर्य कुमार यादव हो गए, रिंकू सिंह वगैरह हो गए, बॉलर्स ही वरुण चक्रवर्ती वगैरह सब अपने फॉर्म में चल रहे। रही बात पाकिस्तान की, वो तो उनका कॉल है कि भाई पहले आप ये बोल रहे हो कि हम नहीं खेलना चाहते, फिर उसके बाद आप यूटर्न ले रहे हो। कम से कम अपने स्टेटमेंट पे आप एक स्टिक करो कि हाँ भाई जो हमने बोल दिया उसके साथ वो कर ही नहीं रहे हो, तो वो उनकी वो है। हाँ ठीक है, ये है मैच को मैच की तरह खेलेंगे, बाकी तो वो तो पता ही है कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। ईशान किशन बनता है क्योंकि वो अच्छा खेलेगा, लेफ्टी बैट्समैन भी है और काफी टाइम से स्कोर भी कर रहा है। वो पिछले 2-3 मैचों से बराबर स्कोर कर रहा है, तो उसे तो बनता है, वो खेलेगा तो हम मैच जीतेंगे। वो और अभिषेक शर्मा को दोनों को खेलना चाहिए। देखिए, फेवरेट की बात करें तो जो इंडिया को जो भी प्रेफर करता है, जो भी ठीक है, वो हमारे लिए फेवरेट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए देश को वो करते हैं, आगे रखते हैं। For more on this, let me go across to Tom O'Ducken of the Bharatiya Janata Party. Thanks so much, sir, for connecting with us. How do you look at this statement that is coming from the Congress Party that Pakistan should be treated as the enemy nation in a backdrop of what has happened in the last 1 year, and no match should be played with them, and in a way central government is betraying the people of the country by allowing this match? Your take on this? This double-faced party called Congress, they have more reach in Pakistan. And here for the Indian audience, they speak about patriotism and what have you. They have a very senior leader in the cricket fraternity. They should take his opinion on this matter before reacting. But this is all for the Indian audience. And in Pakistan, they have a different language. And tone and tenor is different. And they grab headlines there. And they are more popular there than in India. So I think we don't take them seriously. Whatever they say has an agenda, and such agendas don't work in sports. If you're truthful about what you're saying, one can understand. But if you're not truthful, we can see through them. All right, sir, I want to take your opinion on what your reaction is on Udit Raj of the Congress Party. He said that we're playing cricket with the country that killed 26 of our people during the Pahalgam terror attack. And this drama of the government that we will not shake hand, we will not play. So he, in a way, is calling all of this a drama. Your take on this? He would say the same script given by Rahul Gandhi. So there's nothing different, and there can't be any different either. Their patriotism is limited for the Indian audience, and that Indian audience is not buying it. So then they will have a different script for Pakistan, and then the opinions are very different. So, I mean, it's very, it's not appropriate for even to react on the reactions from the Congress Party, because they're double-faced on everything on earth. And anything the government does is negative, and everything that they think is appropriate should happen. So I don't think we need to get any certificates from the Congress Party on these issues. All right. Thanks so much, sir, for connecting with us and bringing your perspective on this. Let me also go across to my colleague Nyamika, who's been tracking the Congress reaction. Good morning, Nyamika. Take us through what the Congress leaders have been saying so far, because they said the similar thing back during the Asia Cup as well after the Pahalgam attack, saying that the India-Pakistan match should not take place, and now repeating that again. Well, good morning, Akansha. And we have seen it how there is politics which is continuously going on regarding this entire matter. Congress party in particular is attacking the BJP government, saying that it has completely failed. As on one side, it was Pakistan who had first, refused to play this cricket match with our country, and now when they are playing, then how it can be allowed? That is the question which the Congress party is asking from the BJP government at center. They are basically stating that this is nothing but just the politics which they are doing, and this is a drama only by saying that the Indian cricket team is not going to shake hands with the Pakistan players. This is all drama, is what is being called by the Congress party.
Party. They are basically stating that how they can allow this particular match to take place as it is Pakistan only who was responsible for the Pahalgam terror attack, in which 26 of our people have died. They are also stating that they should basically ask the army personnel who are deployed at the borders that what is the actual situation there with Pakistan, and there is all this drama which is currently going on in this country by asking our Indian cricket team to play this cricket match with the Pakistan players. So this is the kind of politics which has started over this entire matter. However, on the other side, we have also seen that how BJP is also reacting over the same, as they are basically stating that this is nothing but just the political drama which the Congress party is doing by making this kind of allegations against the BJP government at center. All right, so while the eyes will be on Colombo for that blockbuster India-Pakistan match, back in the country, the politics has started with the Congress party calling this all a drama. Thank you so much, Niyamika, for getting us all those details.